Some of you might be thinking that I enjoy kitchen gardening or I want to grow veggies, herbs, spices because I come from a farming background, but actually that's not true. We were kept away from the farming background. We were made to like study, go to the school, college, and even though I had deep, keen interest in farming, I was told that no, you should study and you should do something else. But you know what? If you're meant to do something, if it's destined, you will do it. These are the garlic cloves that we have kept aside. I think today's kitchen garden tour is amazing. I'm already loving it. And this is the room that we have prepared for the mushrooms. And it is made from normal bricks. Instead of using the cement, we use mud. And then we covered it all, like layered it all with cow dung and mud combination. So it's like pretty much ready. We just need a bamboo shade now over here, and we'll start growing mushrooms also. And these are my favorite ladyfingers. I love ladyfinger as a vegetable. I can eat it, especially if it's mixed with potato. So alright people, let's get started and let's get into it. धनिया बैरो है, धनिया छरे मैले तिमीले सुन्यौ? हाँ? आवाज आ रहा है कि नहीं? जो मैं बोल रही हूँ. हाँ. धनिया मैंने लगा दिया. इस आवाज का क्या कनेक्शन है? अरे धनिया जो बहरा होता है ना, सुनता नहीं. अच्छा, ये मेरी मम्मी की टेक्निक्स हैं कि धनिया बहरा होता है. Okay, let me say it in English. I totally forgot that I'm making it for the whole world. Basically, my mother says that if you want to plant coriander, you got to talk to the coriander, you got to speak to the coriander, and then it's good. तो आप क्या बोल रहे हो उसको? इसको धनिया को छांटते वक्त बोलने पड़ता है, शोर मचाने पड़ता है. अच्छा, तभी आशीष का हो नहीं रहा था, ये बेचारा चुपचाप लगा रहा था. मैं किसान की बेटी हूँ ना, मुझे इसीलिए पता है. तो फावड़ा लेकर. She's farmer's daughter, so she knows everything. I mean, it's great for me. Now we are mixing the coriander with the soil, and that's the process. Later on we'll put water on it, but because it's rainy weather, monsoon is still going on, just for so many butterflies. Yay, look at the butterflies. There's so many butterflies here. So these are angels in my garden, and every time someone moves, they move too. So basically Chesper is, oh my god, there are so many of them. So now it's time for garlic. Chesper is relaxing. What happened to your ears? Chuki 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 chuki. Okay, this is how you plant it. One by one by one. मटर लगाएंगे ना साइड साइड में, इस तरह मटर नहीं होता, झाल में चलेगा, इस तरह साइड साइड में लगा देंगे ना, इतनी दूर दूर में ऐसा चलेगा. Chesper has dug a big hole. मम्मी काम कर रही है तो मैं भी करूँ, इसको मन में यही आ रहा होगा. हाँ, खत्म कर देगी, जल्दी आ जाना आशीष. तो ठीक है मम्मा, he is ruining everything. पीछे देखो, पीछे देखो, वो आशीष को कॉपिंग. He is copying आशीष. अगर इसमें करेगा तो अरे he is giving us support, like even I can do this. He's unstoppable. Chesper, 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 stop it. इनको अकेले में तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आंटी बोल तो रहा था बेचारा. तो है ही बड़ा मास्टर. यहाँ पे कितना अच्छा फील हो रहा है. बताइए. अब ये होएंगे भी या नहीं? हम तो भाई होने के लिए कर रहे हैं. ये होएंगे, ऐसा बोलना पड़ता है ना. तुम बहुत अच्छे से उगोगे और बहुत ज़्यादा हमारे मतलब इतने लहसुन हो जाएंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे लहसुन. ठीक है, वही तो है. अभी तूने वो कर दिया. अब ये गाजर और वो कहाँ है? ये रहे. इसको दे, वो वहाँ पे उसमें एक में एक कैरी में पूरा गाजर लगा.
एक में मूली का है, मूली लगा, तब तक फिर मैं इस लहसुन को लगाती रहती हूँ। अब तुमने इनका तो थोड़ा सा कर लिया ना, अगर वो लगा रहा है तो उसका भी देखना है तो उनका भी देखने जाए। पहले आप कर लो। कितनी लाइन लगाओगे आप? फुल कर दोगे? जितना ये पूरा लगाने के लिए बैठी हूँ। So she would be filling this whole place up, and this is coriander. It's been done. Now the reason why we make the beds like this is so that we can walk on these sort of sections and without ruining or disturbing the growth process of the plant. So it's very important to make very proper kind of beds. So this is for carrot now. आशीष तूने बीज नहीं भिगाए थे इनके? नहीं, ये भिगाए नहीं, ऐसे ही डालते। चलो ठीक है, इस बारी हम बिना भिगोए डाल रहे हैं। ये देखो ना, ये बीज है ही नहीं। ये क्या है? जैसे वो होता नहीं, क्या बोलते हैं, जीरा। हाँ, सेम वैसा ही है। These are carrot seeds. They look like cumin seeds actually. We just have to spread it around like this. इनको भी कुछ कहना है, गाजरों को भी? ठीक है। Basically, you don't need to say anything to the carrots.